Good evening, viewers. This is your anchor, Karimganj. You're now watching Hornbill TV's Northeast Express. Chairman of the Joint Parliamentary Committee (JPC) on the Wakif Amendment Bill, Jagdambi Pal, on Friday arrived in Guwahati. As part of his trip to Assam, he said that they had come on a study visit. Meanwhile, they will meet different stakeholders, including representatives of state government, minority commissions, and Wakif Board. After this, he added that they will go to Bhubaneswar, Kolkata, Patna, and Lucknow. Told you that we have come along with our member of parliament, those who are the JPC on work, for a study visit. Here now in Guwahati we will meet the different stakeholders along with the state government representatives, minority commissions and work boards, and after Guwahati then we will go to the Bhubaneswar, then after Kolkata and Patna, Lucknow. So now we have come on study too, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारी बातचीत हो सके. नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से, स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों से और हमारे हाई कोर्ट के लॉयर्स होंगे और तमाम संगठन जिन्होंने हमको कहा कि हम जेपीसी में अपीयर होना चाहते हैं उनको करेंगे. हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ बनाया है, उस वक्फ की कमेटी पे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के विचार ले सकें, जिससे कि एक अच्छी रिपोर्ट, एक ट्रांसपेरेंट, जो आने वाले दिनों में जो सरकार का इस अमेंडमेंट का मकसद है कि ये ट्रांसपेरेंट बने और जिस मकसद से कोई ये वक्फ करता है उसका फ़ायदा आम माइनॉरिटीज़ को मिले, पसमानदा मुसलमानों को मिले, ख़वातीन, महिलाओं और बच्चों को मिले. और जिस पर्पज़ के लिए वक्फ 3 पर्पजेज के लिए होता है, पॉयस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस, तो वो पर्पजेज भी पूरा हो सके कि उस पवित्र काम के लिए ऐसा एक बेहतर अमेंडमेंट सरकार लेके आई है, वो जेपीसी को दिया है. आज हम उसी सिलसिले में गुवाहाटी में स्टडी टूर में आए हैं. Assam Congress Legislative Party Debabrata Saikia on Friday furnished a list of more than 30 BJP regional and national leaders who have fielded their sons or daughters to carry forward a stronghold over their own constituency. Congress has always been blamed for practicing dynastic politics. However, Saikia on Friday deflected the issue to show that it was also a problem in the Saffron party. Addressing the media on Silchar on Friday afternoon, before leaving for Guwahati after campaigning for Dholai by-election Congress candidate Dhrubajoyti Puriyayastha, Saikia also accused the BJP of threatening the voters to win the Dholai seat. He said that Jayanta Mala Barua, the Guardian Minister of Cachar district, was threatening businessmen and shopkeepers in Baga who rely mostly on their trade with neighbouring Mizoram of the dire consequence if they do not support BJP. He also reiterated that CM Dr. Himanta Biswa Sarma himself favours 1951 as the cut-off the date. And now pressurizing voters of conducting a fresh NCR, he stated. তেখেতে যোৱাকালি কৈছে যে মোৰ ল'ৰা মানে কংগ্ৰেছত পৰিয়ালবাদ চলে, কংগ্ৰেছত কোনে ক'ত সিট পাব জন্মৰ লগে লগে নিশ্চিত হৈ আহে. কিন্তু তেখেতে বোধ কৰোঁ পাহৰি গৈছে যে তেখেতসকলৰ দলৰ কিমানৰ পৰিয়ালত তেনেকুৱা চলিছে. এইখন এখন কাগজ, ইয়াত আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিম. কেইবাটাও পৰিয়ালৰ এনেকুৱা কথা আছে. উদাহৰণস্বৰূপে বেদ প্ৰকাশ গোৱেলৰ ল'ৰা আছিলে পীযুষ গোৱেল, অমিত শ্বাহৰ ল'ৰা জয় শ্বাহ, ৰাজনাথ সিঙৰ ল'ৰা পংকজ সিং MLA, দেৱেন্দ্ৰ প্ৰধান এক্স মিনিষ্টাৰৰ পুতেক ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, প্ৰেম কুমাৰ ধুমাল এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ পুত্ৰ, অনুৰাগ ঠাকুৰ বৰ্তমানে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী, মাধৱৰাও সিন্ধিয়া তেওঁ আমাৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া তেওঁৰ ল'ৰা বিজেপি মিনিষ্টাৰ, নাৰায়ণ ৰাণে এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ, তেওঁৰ পুতেক নীতিশ ৰাণে মহাৰাষ্ট্ৰৰ MLA, ৰিচু খানছু ফৰ্মাৰ স্পীকাৰ, তেখেতৰ পুতেক কিৰণ ৰিজিজু আমাৰ জাষ্টিচ মিনিষ্টাৰ, ৰাও বীৰেন্দ্ৰ সিং তেওঁৰ পুতেক ৰাও ইন্দ্ৰজিৎ সিং, BS য়েডুৰাপ্পা এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ অফ কৰ্ণাটক, তেওঁৰ পুতেক Y ৰাঘৱেন্দ্ৰ MP হয়. আৰু এনেকৈ মই বহুতখিনি আপোনালোকৰ হাতত দি যাম তথ্য. তেওঁ আমাৰ 3জনৰ উদাহৰণ দিছে. মই তেখেতক জানি 30জনৰ উদাহৰণ দিম যে বিজেপিত বেছি পৰিয়ালবাদ চলে. মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনালোকে বিধানসভাৰ তেওঁৰ কথাৰ প্ৰচিডিং চালে দেখিব তেখেতে কৈ থাকে ব্যক্তিগতভাৱে মই 1951 চনক সমৰ্থন কৰোঁ. প্ৰথম কথা. দ্বিতীয় কথা তেখেতে কৈ থাকে যে NRC খন নতুনকৈ হ'ব লাগে.
অন্য হাতেদি মই কৈ থাকোঁ NRC-খনৰ এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্ত্বাৱধানত হৈ গ'ল দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বহু মানুহে তাত নাম সোমাব পৰা নাই আৰু বহু মানুহৰ নাম যদি সঁচাকৈ অন্যই অভিযোগ কৰাৰ দৰে ভুলবশত সোমাইছে সেইবাবে যিটো নেচাৰেল প্ৰক্ৰিয়া তাত ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে যিসকলৰ নাম সোমোৱা নাই তেখেতসকলক ক্লেইম কৰাৰ সুযোগ দিব লাগে যাতে তেখেতসকলে সন্দেহ দূৰ কৰিবলৈ নিজৰ তথ্য প্ৰমাণ পুনৰ এবাৰ দিব পাৰে Tripura's Minister of Fisheries and Scheduled Tribe Caste Welfare Sudhanshu Das has on Friday called for the establishment of a Sanatan Board in India, asking to the Waqif board created for the Muslim community. Das, who recently drew attention for his social media post advocating protection for Hindus, argued that such a board would serve to safeguard the rights and interests of the Hindu community. In response to questions about a separate social media post critical of Rahul Gandhi, leader of the opposition in parliament, Das said Rahul Gandhi is a deceptive figure. Numerous anti-national forces have rallied around him, and also in Maharashtra, for instance, copies of constitution distributed by his supporters were reportedly blank. Das also criticized the recent Jammu and Kashmir Assembly resolution calling for the restoration of Article 370, stating that this demonstrates how the Congress NC alliance disregards the country's territorial integrity. People is the largest population of our country, and this is our legitimate right. And we want, if there is a Waqf board and other religious board, why not Sanatana board will be established in our country? Though the main religion of our country is Sanatana, and though already, as you all know, our country has been divided two parts in the basis of religion. Already Muslim people got one part of our country in the name of Pakistan. They have all the facilities, they got all the benefit from our country. But what the government of India and led by the Congress rules specially, what they allotted for Sanatana Dharma. So that is why I am demanding that our Dharma should be preserved, our religion and our sentiments should be honored by the government of India. And that is we are demanding Sanatan Board in our country to save our Sanatani people. So you have also spoken very vocally against Rahul Gandhi, leader of opposition. So what is your view on this new type of politics which is being taken? See, he's a devious man mainly, if I say, and his intention is always bad. All the international groups on international element are found to connect with Rahul Gandhi. Okay, he is telling about संविधान बचाओ, और संविधान बचाओ इस तरीके की हो रहा है कि ये लोग जो बुक लेके घूम रहे हैं, कल ही इसको एक्सपोज हुआ है महाराष्ट्र में जो चुनाव के प्रचार के खातिर ये जो घूम रहे हैं और जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन बांट रहे हैं, लोग खुल के देख रहे हैं कि ये ब्लैंक पेज है, ठीक है ना, कवर ऊपर में कवर है सिर्फ, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैंक पेज है. और भी सबसे जो शेमफुल थिंग्स हैज हैपेंड इन आवर कंट्री. Yesterday you must have seen that in Jammu and Kashmir Assembly, Congress Party and NC, the National Conference, they brought one resolution for restore the Article 370 in JNK again. So my question, if Rahul Gandhi honored the Constitution, if Rahul Gandhi respect our Constitution, then according to our Constitution, Supreme Court is the highest authority of our country. And Supreme Court already delivered his valuable order in the case of abrogation Article 370. And Honorable Supreme Court uphold the decision taken by the government of India. So my legitimate question to Rahul Gandhi as well as Congress Party, if Supreme Court given the verdict on Article 370 and they uphold, why Congress and their alliance party brought this proposal for restoration this Article 370 in Assembly. So their intention is very clear. They do not want to save our integrity. They do not want to save our sovereignty. And that is why they always try to banish and destroy our country's integrity. And history also improved. And people of India also know what Congress or Rahul Gandhi contributed for our country. The body of 30-year-old Rahul Sheikh, a ferryman who went missing from NH37 last Monday, was recovered today from Jujang Hills under Lakipur police station, area of Cachar district of Assam.
Rahul's body was found buried in a hole 500 meters below Jujang Hills on Thursday. Rahul Sheikh went missing from Jujang Hills area near National Highway 37 on Monday night at around 2:30 a.m. local time. His father Abdul Halim Sheikh, with the help of his men, recovered the body of his son buried in a pit, and he did not receive any assistance from the Lakipur police team, where he lodged a complaint of his son missing. The victim's father had earlier filed a case of kidnapping and suspect of murder. The statement named Tasir Sheikh and Abu Sheikh and other BB dealers. Lakipur police picked up to Tasir Sheikh for interrogation, however, later released him. According to report, Rahul and Tasir went to Jirighat Bazaar separately on Monday to deliver his BDs. They reportedly had an argument on front of another businessman in Jirighat Bazaar. Rahul left the market and engaged in his motorbike for Silchar. লাস্ট কই পাইছুন? তার লাশ পাইছি জুজুম পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে। কিরম পাইছুন? মাটিতে তাকে পুঁতে রেখেছিল। আচ্ছা, আজকে কয়দিন হয়েছে? আজকে 4 দিন হয়েছে। 4 দিন আজকে। আপনার সন্দেহটা কার উপরে আছে? আমার সন্দেহ নয়, 100-এ 100। হ্যাঁ। 1 নম্বরে তাসির শেখ, 2 নম্বরে আবু শেখ, 3 নম্বরে সেলিম শেখ, 4 নম্বরে জোহর শেখ। তারা আপনার ছেলেরে মারছে? তারা মারছে। এরা কোন জায়গার বাসা? এদের অরিজিনাল বাড়ি হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, মুর্শিদাবাদ, সুতি থানা, কাকরামারি এলাকার লোক, এই ইসলামপুর এলাকার লোক। এখন প্রশাসনের কাছে বা কাছারের পুলিশ সুপারের কাছে কিতা দাবি জানাইবা আপনি? দেখেন, আর আমার বলার মতো ভাষা নাই। প্রশাসন এবং এলাকার জনগণের কাছে এবং আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আমার অনুরোধ যে আমার 27 বছরের ছেলে, তার একটা 6 বছরের ছেলে আছে, আর আমার বৌমার 8 মাস প্রেগনেন্ট। এই যে তার পরিবারকে নষ্ট করলো, আমার যে বুক খালি করলো, এদের আমি কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি চাইছি। এবার বাকিটা আমি প্রশাসনের হাতে ছেড়ে দিলাম আর আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিলাম। Massive fire engulfed Ratabari market area of Karimganj district in Assam short while ago. The fire has gutted a few shops of the market on Friday afternoon. It has been learned that the fire started from the shop of one businessman named Shamshul Haq. In a short span of time, 6 shops caught fire and were burned down to ashes. An electric short circuit is suspected to be the cause of fire, as initial reports indicated. Fire brigade service with only 1 vehicle reached the spot after 30 minutes. Finally, after a rescue mission by TAM and the locals, the situation was brought under control with no incident reported of loss of lives or any injury to any civilian. The Dima Hasao District Congress Committee DCC has demanded the arrest of Manjit Naiding, Executive Member EM of the Dima Hasao Autonomous Council's DHAC, in charge of Animal Husbandry Department, who also holds the post of Treasurer of Bharatiya Janata Yuva Morcha, Assam Pradesh Committee. They also demanded the arrest of Forest Ranger Danmai Thausen on Thursday. A delegation of DCC visited Nobdi Lonkikro village in Umrangsao on Thursday and met the victim families. It may be mentioned that the EM of DHAC Manjit Naiding arrived at Nobdi Lonkiro village under Umrangsao police station on October 30 with Ranger Danmai Thausen of Umrangsao Forest Division with a JCB excavator to evict some local residents of the area to order and pave the way for a cement company by constructing a road leading to the factory. A protest by the locals on that day erupted, which ended with few youths and women folk of the area getting injured due to a physical tussle. Furious for not making any inroads for granting the road area to the cement company officials, EM Manjit Naiding allegedly took his PSO's AK-47 rifle and fired 1 round to disperse the villager. Before leaving the spot, the villagers of the Nobdi Lonkikro, fearing for their lives and security posts, the incident lodged a complaint with the Superintendent of Police, Dima Hasao.
However, spokesperson DCC of Dimahasau Dipali Hapila said more than a week has gone by but no action has been taken against Naiding and the forest ranger Dan Maithausen. The DCC has given the SP 7 days to act, failing which they would intensify the protests. हम लोग आज यहाँ कांग्रेस का तरफ से along with our DCC president, vice president, हम लोग का महिला president and secretary, हम लोग सब मिलके आज यहाँ नोबडी लोंगकू क्रो गांव में आया है। लास्ट 30 अक्टूबर में यहाँ बहुत घटना, एक बड़ा घटना हुआ है, उसको लेके हम लोग विक्टिम्स लोग को मिलने हम लोग यहाँ आया। आने के बाद गाँव वाला लोग का साथ बहुत डिस्कशन किया है। हम लोग का लीडर लोग ने आके यहाँ बहुत हम लोग का गांव का आदमी लोग उनका साथ गन फायरिंग भी किया है। और आज हम लोग का कांग्रेस का तरफ से हाफलोंग में डीसी को भी एक मेमोरेंडम दिया। आज तक 1 वीक हो गया तो आज तक कुछ एक्शन नहीं हुआ। एफआईआर भी दिया है, यहाँ गांव का तरफ से भी दिया और आज हम लोग का कांग्रेस का तरफ से भी दिया, लेकिन आज तो कुछ एक्शन कुछ नहीं हुआ अगेन। इसलिए हम लोग आज आए के विक्टिम्स को मिलने आया। ये जो हुआ घटना आज डीसी को भी हम लोग देने का बाद हम लोग डीसी से भी एक बात बोला कि ये घटना हम लोग का गांव वाला लोग से शुरू किया, अटैक किया बोल के वो डीसी भी ऐसा बोला है। तो वो बात सुन के हम लोग को बहुत खराब लगा। क्यों हम लोग का डीसी, हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा से जानकारी नहीं मिलके कैसा वन साइड वो भी किया है। तो वो बोला कि हम लोग का गांव का आदमी लोगों से अटैक किया। अगर गांव का आदमी लोगों ने अटैक किया, हम लोग का ईएम मंजित नाइडिंग वो लोगों को अटैक किया, अगर अटैक किया होने से इंजुरी जोखम हम लोग का गाँव का लड़का लोगों का क्यों हुआ? अगर गांव वाला लोगों से अटैक किया पहला होने से तो उन लोग को जोखम होना चाहिए था। लेकिन आज सब मालूम है हम लोग का गांव का लड़का लोगों को मारा है, हम लोग का औरत लोगों को भी मारा है, उन लोग को गन फायरिंग तक किया है, गोली मार दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट में ये सब सिमिलर ये इंसिडेंट्स होते जाते। आज तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और विद इन 7 days और हम लोग टाइम देता है। हम लोग का मंजित नाइडिंग को अरेस्ट करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। उसके साथ साथ डॉनमाई थाउसेंड वो फॉरेस्ट रेंजर उस दोनों को हम लोग उनका अरेस्ट करने के लिए हम लोग का तरफ से एकदम डिमांड है। अभी जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करना है। जो हादसा हुआ वो तो सभी को मालूम है कितना वो खतरनाक हादसा हुआ था उस दिन। तो उस दिन जब हादसा हुआ था तब उन लोगों ने फायर तक भी किया है, मारने का कोशिश भी किया है। तो इतना तक भी हुआ है और बहुत धमकी देके गया है कि ये कर देगा वो कर देगा, जहाँ पे भी रहने दो, कहीं से भी होने से भी कोच के उन लोग को ढूंढ के किडनैप करके होने से भी मार दिया जाएगा, ऐसा बोल के बोला है। परिवार लोगों को में भी मतलब अब लोग सेफ्टी नहीं है, मतलब बहुत ऐसा बोल के गया है। तो हम लोग को अभी सेफ्टी मतलब जहाँ में भी रहने दो हम लोग को सेफ्टी महसूस नहीं होता है अभी। तो हम लोग का तरफ से सभी तरफ से भी हम लोग का एक मांग है कि हम लोग को थोड़ा इस सब के लिए सिक्योरिटी चाहिए, हम लोग का सेफ्टी के लिए तो थोड़ा सा विचार करें। और हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का सेफ्टी के लिए एक सिक्योरिटी हम लोग को चाहिए। Manipur police arrested 4 members of the proscribed outfit Kanglai Yowal Kana Loop KYKL SOREPA from Imphal East District for the physical assault of a 23-year-old railway driver, a police statement said on Thursday. Police said in connection with a case related to abduction and assault of Joshua Kamai from Kambiron, Puilwan, a hideout of suspects at Urub Mayai Laikai was raided and 4 KYKYL Sorepa members were arrested along with arms. The arrested persons were identified as Hijam Nikhil Singh, 27 years old, Hijam Thanglam Mete, 30 years old, Thongjam Nimten Singh, a 32-year-old, and Gobin Ilangbam, 29 years old. Police recovered 1 SLR, 1 303 rifle, 2 4-wheeler and other incriminating items from their possession. 2 drug users who were in their custody were also rescued, it said, adding further investigation follows. Meanwhile, in connection with the assault of 2 persons from Senapati on 31st October at Lamsang, another accused person was arrested. He has been identified as Lorembam Surjit Mete of Tauthong, Ayungba, and he was arrested on 7th November from his house. Police also seized foreign liquor from shops in Tuibuang Bazar of Churachandpur.
Meghalaya Education Minister Rakam A. Sangma on Thursday pledged to provide a new school building for Raitong Government Lower Primary School at Raitong area of Inriboi district as the school celebrated its Platinum Jubilee celebration commemoration of its 75 years since its establishment in 1949. During the event, Minister also promised to construct school buildings for 6 additional schools in Guwahati constituency. He also emphasized that the state government intends to improve all government schools across Meghalaya to meet contemporary educational standards. He urged parents, teachers and students to work together to help students achieve their life aspiration, and he also encouraged students to learn multiple languages to broaden their horizons and pursue opportunities worldwide. He highlighted that so far 25 nurses from Meghalaya have successfully secured employment in Japan through government support, education role in creating job opportunities. Guwahati MLA Charles Mangar meanwhile shared his vision of bringing transformative changes to Guwahati constituency, particularly through establishing government-run colleges and higher secondary schools. Government schools, college, higher secondary, upper primary and government LP schools will be constructed. New building will be renovated, will be repaired. This is a decision of the government. Therefore, it's my request to the DSO, district officials, please get corrected. All the datas, all the information, the respective schools, which schools need a new building, which schools need a repairing and renovation. I think today you have submitted one memorandum about this building. Without looking at I have already gone through, but to me, I want to assure you that this Raitong Government LP School will receive a sanction for new construction of the new government school building in next few months, which will be having 6 to 7 rooms additional. And not only this school, many 4, 5, 6, 7 new buildings will be constructed under our Honorable MLA's constituency. But not only this, for the entire district, it's my request to the DSO. There are many schools which have been properly monitored. Data has not been corrected. Therefore, just get the data correct so that which schools will be needing which need some intervention here and there. There's some school which needs only the furniture. There's some school which only the change of roof. Some school needs a small repairing. Some school need a completely new. So therefore, under Mission Education, Government of Meghalaya is planning to completely transform the government institutions first. And we understand the shortage of the teachers that we are looking at. And also, from the government, we will proceed to the deficit and even to the ad hoc and some private. Therefore, today we have seen, and today let me thank the finalists, the founding father, those who opened up this school. We know, we understand that running such a school, it's not an easy task, but you have took journey for long. And therefore, as a government, we are all with you. That's all for now. For more news, keep watching Hornbill TV.